Propagation. The topic for this video is vegetative propagation. It is a method of asexual reproduction, and this method of asexual reproduction is seen in case of plants. So we are going to discuss in detail about vegetative propagation. First, we should know the meaning of the term vegetative propagation. तो हम लोग को जानना सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है। हम लोग सब ये जानते हैं कि प्लांट्स को प्रोपागेट करना यानी उनका नंबर को इंक्रीज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका उनका सीड्स को यूज करना, सीड्स को जर्मिनेट करवाना, उन सीड्स को सीडलिंग में कन्वर्ट करना, फिर प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका प्लांट्स का नंबर को बढ़ाना बाय यूजिंग द सीड्स, जो जनरल माना जाता है। हम लोग को अगर बोला जाए कि प्लांट्स का नंबर बढ़ाना, तो फर्स्ट दिमाग में आता है कि सीड्स को सॉ करना और उससे प्लांट्स डेवलप हो जाएंगे। बट प्लांट्स कैन ऑल्सो बी प्रोपागेटेड बाय पार्ट्स अदर देन सीड्स। आपने सुना होगा कि स्टेम से भी प्लांट्स को प्रोपागेट किया जा सकता है, रूट से भी प्रोपागेट किया जा सकता है। सो asexual reproduction in plants, vegetative propagation. Vegetative propagation is the process of asexual reproduction in plants, क्योंकि यहाँ एक ही plant involve होता है, only one parent is involved, where parts of the body such as root, stem, leaf, etc. detach from the parent body and develop into new self-supporting plant. So asexual reproduction in plants यानी vegetative propagation में plants को propagate किया जाता है by parts other than seeds. It is the simplest method of reproduction in plants. Most of the ornamental plants like orchids, cactus, grasses nowadays are grown through this method. Ornamental plants, plants that are used for decoration purpose. और आप ये नीचे अगर ये जो इमेज देखोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है। यहाँ एक प्लांट का स्टेम को कट किया गया, स्टेम को सुटेबल मीडियम में सॉइल और कंपोस्ट में इसमें इंसर्ट किया गया, उसका एक पोर्शन को, एंड आफ्टर सम डेज इट विल डेवलप द रूट्स और ये एक नया प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, so if I ask you what is vegetative propagation, propagation of plants by parts other than seeds. Which parts? Maybe root, maybe stem or leaf. यहाँ आप देख सकते हो ये ब्रायोफाइलम का लीफ है और लीफ में कुछ बर्ड्स डेवलप है। अगर इन बर्ड्स को सुटेबल मीडियम मिल जाए, ये बर्ड्स डिटैच हो जाए एंड इफ दे फॉलो द सॉइल, ईच ऑफ दैट बर्ड विल डेवलप इनटू इंडिविजुअल प्लांट। So इस तरह अगर प्लांट्स को प्रोपागेट किया जाए बाय पार्ट्स अदर देन सीड, देन इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें कुछ नेचुरल मेथड्स भी है और आर्टिफिशियल भी हम लोग कर सकते हैं। ज्यादातर आजकल आर्टिफिशियल मेथड यूज किया जाता है फॉर फास्टर ग्रोइंग। नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय रूट्स, बाय स्टेम्स एंड बाय एडवेंटिशियस बड्स ऑन द लीव्स। बाय रूट्स, plants like sweet potato, dahlia, guava, etc. naturally propagates by roots. अगर आप एक स्वीट पोटैटो का प्लांट कहीं पे लगा देते हो, नेचुरली उसका रूट स्प्रेड होते रहेगा एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सिमिलरली डालिया, फ्लावर, गुआवा का केस में प्लांट्स कैन प्रोपागेटेड बाय रूट्स। बाय स्टेम्स, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम्स ऑकर इन वाटर हाइसिंथ। नेचुरली वाटर हाइसिंथ, ये पानी में एक्वाटिक प्लांट है, ये पुदीना, मिंट, ग्रासेस, ये सब नेचुरली बाय स्टेम से प्रोपागेट होते रहते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स लाइक पोटैटो, ऑनियन, जिंजर, टर्मरिक एक्सेट्रा आल्सो द सोर्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सो कुछ प्लांट्स नेचुरली बाय रूट्स, कुछ प्लांट्स नेचुरली बाय स्टेम्स प्रोपागेट करते रहते हैं, उनका नंबर इंक्रीज होते रहता है। ओके, तो यहाँ पे एक नया चीज आप लोग को देखने में मिला होगा, पोटैटो। Potato underground है, ginger underground है, these are not roots, these are stems. Okay. Then by adventitious bud on the leaves, adventitious bud मतलब वो बर्ड जो नॉर्मल पोजीशन में नहीं किसी और पोजीशन में डेवलप होता है। नॉर्मली बर्ड्स डेवलप होता है टिप ऑफ द स्टेम। अगर बर्ड उस पोजीशन में नहीं हो, कोई और पोजीशन में डेवलप हो रहा है, कहीं और पे डेवलप हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस बड। Fleshy leaves of certain plants like bryophyllum. Bryophyllum plant का ये जो लीफ है वो थिक लीफ होता है, फ्लैशी होता है। Okay, so the fleshy leaves of certain plants like bryophyllum bear adventitious bud
along the margin of the leaf. तो लीफ मार्जिन में यहाँ पे डेवलप होता है बड्स, collection of leaves. When these birds containing leaves fall on the soil, जब ये birds separate होगा leaf से, when they fall on the soil, each bud will give rise to an independent plant. So natural methods of vegetative propagation में कुछ plants naturally propagate करते हैं by roots, some propagate by stems and some other propagate by adventitious bud. Okay, और adventitious bud में adventitious bud on the leaves as in case of bryophyllum. So if I ask you, name two plants that propagate by roots, they are sweet potato, dahlia. Name two plants that propagate by underground stems, potato, ginger. Name two plants that propagate by stems, pudina, water hyacinth. Okay. So ये था natural methods. These are the natural methods of vegetative propagation. और यहाँ आप देख सकते हो sweet potato with उनका vegetative propagation, underground swollen roots are there. यहाँ पे food store किया जाता है plants के द्वारा, and they can increase their number by these underground stems. Sweet potato, sorry, it is root, underground root, and potato is the stem. Next, dahlia roots you can see here. These roots can be used for propagation of these plants. यहाँ आप देख सकते हो लेफ्ट में वाटर हाइसिंथ जो पॉन्ड वगैरह में आपको दिखेगा, लेक्स में भी दिखाई देगा, और राइट साइड में पुदीना और मिंट, ये स्टेम से प्रोपागेट होता है नेचुरली. और यहाँ आप बर्ड्स देख सकते हो इन ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम का लीव्स में आप देख सकते हो छोटे छोटे बर्ड्स, और ये बर्ड्स जब डिटैच होते हैं पेरेंट प्लांट से, लीव से, when they fall on the soil, and each of these birds will develop into individual plant.